जब हम रात को तारों से भरा आसमान देखते हैं तो वह हमें बहुत ही शांत और मनमोहक लगता है, पर हमारा ब्रह्मांड इतनी शांत जगह नहीं है। यहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं जो मनुष्य की सोच से परे हैं, और यहाँ पर कई विध्वंसक और भयानक घटनाएं भी होती हैं जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज हम अंतरिक्ष के कुछ ऐसे ही डरों का सामना करेंगे। आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्नोलॉजीज। मेरा नाम है राजीव रंजन कुमार। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। नंबर 5 पर है एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट। 9 जनवरी 2017 को जब हम अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, तब एक एस्ट्रॉइड यानी कि एक क्षुद्र ग्रह धरती से टकराने के काफी करीब था। 2017 AG 13 के नाम से जाना जाने वाला यह एस्ट्रॉइड धरती और चांद के बीच से आधी दूरी से निकल गया। यह एस्ट्रॉइड 25 से 30 मीटर लंबा था, यानी कि तुलना में यह 10 मंजिली इमारत के करीब था। 2013 में इतना ही बड़ा एस्ट्रॉइड रशिया के चेलिबिन शहर के ऊपर टूटकर बिखर गया था, जिसकी वजह से 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पर ये दोनों एस्ट्रॉइड उन लाखों करोड़ों एस्ट्रॉइड और कॉमेट यानी कि धूमकेतु में से एक हैं जो हमारे सौरमंडल में मौजूद हैं, और इनमें से कई धरती के परिक्रमा पथ के काफी करीब हैं। एक आंकड़ों के मुताबिक 2017 तक 857 ऐसे एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट का पता लगा लिया गया है जो धरती के काफी करीब हैं और जिनकी लंबाई 1 किलोमीटर से ज्यादा है। अंतरिक्ष में भटकते हुए विशाल पर्वत के आकार के एस्ट्रॉइड पूरी धरती से जीवन का नामो निशान मिटा देने की क्षमता रखते हैं, और माना जाता है हजारों साल पहले एक ऐसा ही विशाल एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया था जिसने डायनासोर की पूरी प्रजाति का विनाश कर दिया था। जो हजारों साल पहले हुआ था वह आज भी हो सकता है। इसलिए नासा का एक प्रोजेक्ट है जो धरती के काफी करीब आ रहे एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट पर नजर रखता है। लेकिन यह प्रोजेक्ट भी सिर्फ 1 किलोमीटर लंबाई से बड़े एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट पर ही नजर रखता है जो पूरी पृथ्वी पर विनाश ला सकते हैं। पर इनसे छोटे एस्ट्रॉइड हजारों की संख्या में मौजूद हैं जो पृथ्वी से टकरा सकते हैं। इनके टकराने से विश्व स्तर का विनाश तो नहीं होगा, पर यह एक पूरे शहर का विनाश करने की क्षमता रखते हैं। और चिंता की बात यह है कि इन सब पर नजर रख पाना संभव नहीं है। 9 जनवरी को जो एस्ट्रॉइड धरती के काफी करीब से गुजरा था, उसका पता भी धरती के पास से गुजर जाने के बाद लगाया जा सका। लेकिन हम अभी भी सुरक्षित हैं और ऐसा कोई बड़ा हादसा अभी तक नहीं हुआ है। इसके लिए हमें जुपिटर यानी कि बृहस्पति का शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति की वजह से हम बचते आ रहे हैं। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत है या इन एस्ट्रॉइड और कॉमेट का रुख बदल देता है और हमें इनमें से कई खतरों से बचाता है। नंबर 4 पर है रोज प्लैनेट। अगर एस्ट्रॉइड्स या कॉमेट का पृथ्वी से टकराना आपको भयानक लगता है, तो किसी ग्रह से पृथ्वी के टकराने के बारे में आप क्या सोचते हैं? अभी तक आपने पृथ्वी के किसी ग्रह से टकराने की अफवाह आपने इंटरनेट पर कई बार सुनी होगी, पर ऐसा हो भी सकता है। जब ग्रहों की बात आती है तो ऐसे खगोल पिंड की तस्वीर दिमाग में आती है जो एक निश्चित कक्षा में अपने सितारे की परिक्रमा करता है। अगर सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में अपने सितारे की परिक्रमा करें तो कोई किसी से नहीं टकराएगा, पर कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं। ये वह ग्रह हैं जो किसी भी सौरमंडल से बंधे हुए नहीं हैं और खुलेआम अंतरिक्ष में भटकते हुए सीधे आकाशगंगा की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों को रोज प्लैनेट यानी कि लावारिस ग्रह भी कहा जाता है। ये ऐसे ग्रह हैं जो किसी कारण से अपने सौरमंडल से बाहर धकेल दिए गए हों, या फिर इनका निर्माण अपने आप हुआ हो, ठीक वैसे ही जैसे सितारों का निर्माण होता है। और ऐसे पिंड जिनका निर्माण अपने आप हुआ है उन्हें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ब्राउन ड्वार्फ का नाम दिया है। और ये लावारिस ग्रह और पिंड भारी संख्या में अंतरिक्ष में मौजूद हैं, और क्योंकि इनका अपना प्रकाश नहीं होता, इन्हें सीधे तरीके से देख पाना संभव नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनकी संख्या ब्रह्मांड में मौजूद सितारों के बराबर है, यानी कि जितने सितारे आप आसमान में देख रहे हैं उतने ही लावारिस ग्रह भी आसमान में मौजूद हैं। वाइस 0855 एक लावारिस ग्रह है जो अब तक के ढूंढे गए लावारिस ग्रहों में से सबसे करीब है। यह ग्रह पृथ्वी से 7 प्रकाश वर्ष दूर है। किसी लावारिस ग्रह से पृथ्वी की टकराने की संभावना अभी निकट भविष्य में नहीं है, पर वैज्ञानिकों के सिद्धांत की बात माने तो पृथ्वी पहले ही एक ग्रह से टकरा चुकी है। जायंट इम्पैक्ट के सिद्धांत के मुताबिक 450 करोड़ साल पहले एक मंगल ग्रह के आकार का ग्रह, जिसे थिया के नाम से जाना जाता था, पृथ्वी से टकरा गया था।
माना जाता है कि यह ग्रह पृथ्वी के समानांतर कक्षा में परिक्रमा करता था और बृहस्पति और बुध ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से यह पृथ्वी के कक्षा में आकर पृथ्वी से टकरा गया। इस टक्कर में थिया ग्रह पूरी तरह से नष्ट हो गया और टकराव के बाद पृथ्वी और इस ग्रह के कुछ टुकड़े अंतरिक्ष में पहुंच गए जो बाद में इकट्ठा होकर पृथ्वी का चांद बन गए। इस सिद्धांत का सबूत अपोलो मिशन में भी प्राप्त हुआ था। जब इस मिशन द्वारा चांद से लाए गए नमूनों का परीक्षण हुआ तो यह पाया गया कि इनकी संरचना पृथ्वी पर मौजूद मिट्टी की संरचना से मेल खाती है। नंबर 3 पर है हाइपर वेलोसिटी स्टार। एक लावारिस ग्रह से ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है? एक लावारिस भटकता सितारा। तो आइए मिलते हैं हाइपर वेलोसिटी स्टार से। हाइपर वेलोसिटी स्टार एक ऐसा सितारा है जो काफी तेज गति से अंतरिक्ष में चलता है। इनकी गति इतनी तेज होती है कि ये आकाशगंगा की एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा होती है। ऐसे तो अंतरिक्ष में हर चीज गतिमान है, यहाँ तक कि हमारे सितारे भी गतिमान है और यह आकाशगंगा का चक्कर लगाती हैं। पर आम तारों की गति 100 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, तो वहीं हाइपर वेलोसिटी स्टार की गति 10 गुना ज्यादा यानी कि 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और कुछ हाइपर वेलोसिटी स्टार ऐसे भी हैं जिन्होंने आकाशगंगा से सफर करते हुए अब वो आकाशगंगा से बाहर निकल चुके हैं। हाइपर वेलोसिटी स्टार कैसे बनते हैं, इसके 2 सिद्धांत हैं और दोनों ही सिद्धांतों में एक बात समान है कि हाइपर वेलोसिटी स्टार का जन्म बाइनरी स्टार सिस्टम यानी कि 2 तारों के मंडल से होता है। बाइनरी स्टार सिस्टम में 2 तारे होते हैं जो एक दूसरे के साझे द्रव्यमान के केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ मास की परिक्रमा करते हैं। पहले सिद्धांत के मुताबिक अगर ये बाइनरी स्टार सिस्टम किसी ब्लैक होल के समीप चले जाते हैं तो संभव है कि इनमें से एक तारा ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के बल में फंस जाएगा और दूसरा तारा तीव्र गति से बाहर फेंक दिया जाएगा जो हाइपर वेलोसिटी स्टार बन जाता है। दूसरे सिद्धांत के मुताबिक जब इन बाइनरी सिस्टम में से एक सितारे में सुपरनोवा का विस्फोट हो जाए तो दूसरा सितारा विस्फोट के कारण तेजी से बाहर धकेल दिया जाएगा जिसकी वजह से वह हाइपर वेलोसिटी स्टार बन जाएगा। नंबर 2 पर है रोज ब्लैक होल। अब हम बात करेंगे अंतरिक्ष के विशालकाय दानवों की यानी कि ब्लैक होल की। ब्लैक होल एक ऐसे खगोलीय क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तेज होता है कि उसके अंदर जाने के बाद कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। माना जाता है कि हर आकाशगंगा के मध्य में एक विशालकाय ब्लैक होल मौजूद होता है और हमारे आकाशगंगा के मध्य में भी एक विशालकाय ब्लैक होल मौजूद है। जो भी वस्तु इस ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र के अंदर आता है वह वस्तु इस ब्लैक होल के द्वारा निगल लिया जाता है और वह हमेशा के लिए उस ब्लैक होल का हिस्सा बनकर रह जाता है। ब्लैक होल में गिरने के लिए आपको इसके करीब जाना पड़ेगा, लेकिन हाल ही में चौंका देने वाली एक खोज हुई है जो इन ब्लैक होल को और भी भयानक और डरावना बना देती है। चंद्रा एक्स-रे टेलीस्कोप की मदद से एक ब्लैक होल का पता लगाया गया है जिसे XJ1417+52 के नाम से जाना जाता है। यह ब्लैक होल किसी आकाशगंगा के मध्य में नहीं है बल्कि यह रोज ब्लैक होल है यानी कि एक भटकता हुआ ब्लैक होल है। इस ब्लैक होल को लेंटिकुलर आकाशगंगा के किनारे पर देखा गया है और यह आकाशगंगा पृथ्वी से 450 प्रकाश वर्ष दूर है। इस तरह के ब्लैक होल तब पैदा होते हैं जब 2 आकाशगंगाएं आपस में टकराती हैं या फिर आपस में विलय हो जाते हैं। और इस तरह के ब्लैक होल भयानक और डरावने इसलिए हैं क्योंकि यह अंतरिक्ष में भटकते हुए अपने आसपास आ रहे चीजों को निगल सकते हैं। नंबर 1 पर है कोलिजन ऑफ गैलेक्सीज यानी कि आकाशगंगाओं का टकराव। अब यदि आपको धरती के किसी एस्ट्रॉयड से टकराने की घटना या फिर किसी लावारिस ग्रह से टकराने की घटना या किसी भटकते ब्लैक होल द्वारा निगल लिए जाने की घटना डरावनी लगती है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ भी निकट भविष्य में नहीं होने वाला है और न ही ऐसा कुछ निश्चित है। लेकिन एक घटना ऐसी है जो भविष्य में होगी और वैज्ञानिकों का कहना है यह निश्चित है। आज से 450 करोड़ साल बाद हमारी आकाशगंगा मिल्की वे दूसरी आकाशगंगा एंड्रोमेडा से जा टकराएगी। सोचने में यह घटना बहुत डरावनी लगती है और ऐसा लगता है इससे काफी विनाश होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है।
इन दोनों आकाशगंगाओं के टकराने से इनके किसी भी सितारे के एक दूसरे से टकराने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि सितारों के बीच में दूरी इतनी ज्यादा है कि इनका आपस में टकराना संभव नहीं है। इस टकराव से इन दोनों आकाशगंगाओं का आपस में विलय हो जाएगा और इनके बीच में मौजूद ब्लैक होल भी एक दूसरे में विलय होकर एक विशालकाय ब्लैक होल बना लेंगे। अब सवाल आता है कि इस टकराव से हमारे सौर मंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जवाब यह है कि इस टकराव से सौर मंडल और उनके ग्रहों पर कोई खास असर नहीं आएगा। बस इतना होगा कि हमारा सौर मंडल विलय के बाद बने आकाशगंगा के और भी बाहर की तरफ चला जाएगा। लेकिन यह सब देखने के लिए शायद मनुष्य जाति मौजूद ना हो, क्योंकि उस वक्त तक धरती की सतह बहुत गर्म हो चुकी होगी, जहां पर तरल पानी का रहना संभव नहीं होगा, इसलिए जीवन भी समाप्त हो जाएगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सूरज की रोशनी उस वक्त तक 35 से 40% बढ़ चुकी होगी और सूरज अपने जीवन के अंतिम क्षणों में होगा। इस तरह के आकाशगंगाओं के टकराने घटना आम है और अभी NGC 2207 और IC 2163 दो आकाशगंगाएं हैं जो आपस में टकराने के क्रम में हैं और इनके विलय होने की प्रक्रिया लाखों साल चलेगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Its own planetary system around itself. Anton, and all this is created from our beautiful planet Earth, but hypothetical slowly question. Losing more and more mass. What if the smallest discovered black hole it didn't take long to create something absolutely marvelous and incredible, or possibly approached our planet? So there you go. This is actually what I was trying to create. Let's find out what whole time happens, and very beautiful, very unusual looking creation system, and to made entirely out of our planet Earth. And hopefully this is something that you enjoyed watching. If you did, don't forget to subscribe. And you know what? Consider coming back here tomorrow because you might learn something completely different. So in one of the previous videos, we actually got to visit the smallest black hole discovered so far, known as IGRJ 17091 and 2624. I also kind of explained to you how it was very likely created and what's going to happen to the system in the future. But in this video, let's actually assume a hypothetical example. But anyway, where this system actually decides to come close to our solar system and possibly even approaches our planet Earth. And specifically, I'm not really talking about this red dwarf that you see here, which is the partner star for IGRJ. But we're actually talking about the black hole itself. That's about 3 to maybe 5 masses in the next few of the sun, and it's about to swallow this red dwarf, I think. Yep, there you go, it's gone. So, let's assume that this star somehow made it all the way to our solar system, even though it's technically like 28,000 light years away from us right now. Let's assume this is the future, or maybe there's a similar black hole that we haven't discovered yet that is actually on the way to our solar system and is going to basically fly through it at a distance of a few astronomical units away from the sun. We're going to aim right here. I don't know exactly where, but we're going to launch it at a velocity of about 240 kilometers per second, which is actually an approximate speed of our sun around the central black hole in the Milky Way galaxy. And so it's going to be moving relatively fast. And so here it is entering our solar system. And it's actually not very big, and it's close to invisible. It's very, very tiny. It's about 5 kilometers in radius only. 5 masses of the sun. So in comparison to Earth, this would be a very, very small object. This would be basically the size of kind of a large asteroid. Kind of maybe similar to the one that killed the dinosaurs 65 million years ago. And it's moving through our solar system really, really fast. So I'm going to accelerate time here. And let's just watch and see what happens to the entire solar system as this 5 masses of sun black hole passes through essentially the central region or the inner solar system. And you can kind of see that most of the planets have already kind of started to divert their orbits. It's actually a little bit easier to see if I look at this from top here, and if I accelerate time from this angle. So you can see the Venus is already stretching away. Earth is kind of moving closer here as well. And there goes that black hole really, really, really fast. And look at that. So Venus gets slingshot maneuver from this approach, and the sun gets kicked out as well. All of the planets basically get
thrown out of the system. And I think for the most part, this actually will destroy our solar system. Most of the planets that are not captured back by the sun will actually stay in place right there. Like Saturn and Jupiter will actually very likely be orphan planets now. They'll have no parent star. And it's possible that this actually happened in the past. If a star passed by another star, which is actually not a very common event, it's actually kind of rare. But if this happened, the one of the stars might actually fly away, leaving all of the other planets behind, leaving completely empty solar system that doesn't have a sun anymore, or essentially all of these rogue planets that will now just kind of spread through the galaxies by themselves. But as you can see, both Mercury and Earth, and also a few asteroids, are still kind of in orbit around the sun. And Earth actually seems to be, wow, just fine. Okay, no, never mind. It's a little bit hot. It's a little bit toasty. 60 degrees Celsius on average. But nevertheless, it's still around. So, what about if this particular black hole approached really close to our planet Earth? Or better even, just for the sakes of making this very beautiful, let's go to a simulation known as Earth and the Moon. And let's assume that this black hole actually decides to capture Earth in its orbit relatively close to itself. So we're going to actually place this black hole in an orbit of about 20,000-ish kilometers here. And so here we go. Here's the black hole in orbit around our planet Earth, although technically it's going to be Earth orbiting the black hole. And it's actually very, very small. It's not very large. You can kind of take Great Pyramid of Giza here for comparison. You can see how small it actually is. So it's just a few kilometers in size. Now, what's going to happen is that right away, our Earth will actually start falling apart. And this is going to happen relatively quick, actually. There you go. Those rocks flew out of Earth really quickly. And this is actually in milliseconds per second. So this is 1/5 of the actual real time. Now, the reason it's happening is because this tiny, tiny black hole, even though its mass is not actually very large, it's exerting a tremendous tidal force on our planet. And the tidal forces here are so strong that chunks of Earth are essentially leaving the planet, making it slowly lose mass. You can actually check out the mass graph here just to see that it's actually going to start losing mass over time. So if I were to accelerate this a little bit faster, you would see that this is actually going to happen with quite a lot of intensity relatively fast. Let's actually change it to, okay, this is almost real time. So this is second per second. Now watch what's going to happen to our planet. So essentially, this is in real time, and this is what you would most likely see if you were to look up into the skies. And actually, let's just stand somewhere that's not destroyed yet, maybe right here. And so here we are on the surface of our planet Earth, and we're going to be looking into the skies and just seeing what we see. I basically press C to stand on the surface, and there's that black hole with all of the chunks of Earth that have now become almost like a ring around our planet. And this is the fire that's created, or I guess the molten Earth that's created by all of the asteroids that do fall back to the planet, and also the tidal forces that essentially heat up the planet from the inside. Now let's run this for maybe a few minutes, and just so you can actually see what's going to happen to our planet eventually. And also, don't forget that somewhere nearby, there is also our companion, the Moon. There it is. And as you can imagine, the Moon is actually also coming this way, and at some point is going to approach our planet Earth, and very likely either collide with the black hole or collide with Earth. And so I'm going to run this just for fun, just to see what all of this turns into, because right now our planet is just being shredded. Essentially, the equator here is being bombarded with tremendous amounts of its own matter, so basically Earth particles. And the rest of the planet seems to be, it looks okay, but it's really not. Tremendous tsunamis, earthquakes, huge tidal forces that will probably rip everyone apart. And at this point, everyone is essentially dead. But the planet is still kicking. It's still kind of round. It's still spherical.
It is getting hot though. It's getting really, really, really hot. Anyway, we're gonna run this and observe what happens. And most of our planet is now covered in the molten part of the surface. And you can kind of see that even the moon started to slowly fall apart because of the tidal forces that are generated by the black hole. This is actually what it looks like from a distance here. And we're going to observe our approach from this angle for a little bit. But you can see that even the moon particles are striking back at the moon and ripping itself apart. And so here goes nothing. Here comes the big collision between the Earth and the moon, or possibly the black hole and the moon. And this is going to be very likely very, very beautiful. So here we go. Ready? And let's slow down time here. And here it is. And it just kind of disappeared. Interesting. Alright, so that's basically a moon being sucked into the black hole and disappearing completely. Now, if I were to run this continuously for many, many hours, what you would eventually see is that, well, first of all, our Earth is going to start evaporating and create a very, very beautiful, very fiery looking accretion disk around IGRJ 1709. And I think I'm going to run this for maybe a few more in-game minutes just to show you what it's going to look like later on. And so there go those fiery particles, creating a very, very beautiful, very alarmingly looking and very interesting looking accretion disk. There's actually even a fragment that became its own moon. 13 masses of the moon. And all of this is coming from Earth. Earth is essentially falling apart. It's already under 3 masses of the moon, and it's creating these huge, huge particles and also a lot of other really interesting special effects. And so essentially that's what would happen if the smallest black hole in our galaxy actually orbited or came close to our planet Earth. And look at what this game is doing to all of these crazy particles. It's creating its own system, its own planetary system around itself. And all of this is created from our beautiful planet Earth that's slowly losing more and more mass. And well, it didn't take long to create something absolutely marvelous and incredible looking. So there you go. This is actually what I was trying to create this whole time. A very beautiful, very unusual looking accretion disk made entirely out of our planet Earth. And hopefully this is something that you enjoyed watching. And if you did, don't forget to subscribe. And you know what? Consider coming back here tomorrow, because you might learn something completely different about space, sciences, or math. And anyway, I'll see you guys in the next video. Space out. And consider maybe supporting this channel on Patreon too, because, you know, it does help me make better videos. But anyway, thank you so much for all of your support, guys. I appreciate all of your help, and I really enjoy making these videos, so all of your comments make my life so much happier. Thank you. I'll see you in the next video. Bye-bye. And I'm just going to accelerate this even more, just to see what this whole thing turns into in the next few seconds.